So, a quick revision of what we saw last time. Bubble sort, if the elements are there in an unsorted way, ये रहा मेरा element unsorted way पे है, तो bubble sort की logic क्या कहती है? There would be two loops working. एक loop जो हर स्टेप में कितनी बार साइकिल चलना है वो डिसाइड करेगा, और एक टोटल कितना साइकिल चलना है वो डिसाइड करेगा. सो सीट, one step, two step, three step, and so on. So this is one loop. Another loop that I am calling out is on the right side. ये जो एरो से मैं दिखा रहा हूँ, एक लूप डिसाइड कर रहा है कि कितनी बार होना है. तो यहाँ पे कितनी बार हो रहा है? 1 2 3 4 5 6. अगली बार हो रहा है 5, 1 2 3 4 5. उसके बाद हो रहा है 4, 1 2 3 4. फिर हो रहा है 3, 1 2 3 2, एंड सो ऑन. सो वन लूप इज वर्किंग इन दिस मैनर, deciding the number of steps that are going to take, and another is which is deciding how many steps would be there. So what do we see? We conclude one thing in bubble sort, that the loop, this loop which is going the right side, it is decreasing. First time it is 6, second time it is 5, then 4, then 3, 2, and 1, so on. And how many steps are going to take in a vertical column wise order? This depends on the number of elements which are there in the particular list. Like here we have total 1 2 3 4 5 6 7 elements. So the loop will be working depending on the number of elements. So one step, iteration 1, iteration 2, iteration 3, 4, 5, and of course there would be 6 also. Last step, which is not shown here. And what is the concept it works on? Heavier elements settle down. It works on the concept of heavier elements settling down. A quick revision, quick follow up of what we have seen last time. क्या हो रहा है इसमें? पहले इन दोनों का कंपेयर होगा, जो भी भारी रहेगा वो नीचे रहेगा, तो देयर इज नो चेंज. Now there would be a comparison between these two, 24 and 5. Whichever is heavier, it will settle down. 24 has moved down. Now comparison between 24, 19, moved down. 24 and 2 comparison, 24 will move down. 24 and 17 comparison, 24 is moved down. 24 and 4 comparison, and at last 24 has come down. Now at this step, now this is the heaviest element in the, or the biggest element in the list. इन द कमिंग प्रिसीडिंग स्टेप दिस विल बी नॉट इंक्लूडेड. अब ये तो सबसे भारी है भाई, अब यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं है, इसलिए एक स्टेप कम हो गया. Now it is going to compare only between the remaining upper elements, and accordingly again swapping will take place depending on if the element is heavy. If the first element is heavier than the second one, 13 5 का comparison, 13 भारी है. 13 19 no change. 19 2 yes change. 1917 yes change. 19 4 yes change. Now these two are the heavier. अब बचे हुए steps यहाँ पे होंगे. So this is what bubble sort works, how it is working. Now, today, let us first understand the concept of insertion sort. That is what we are going to see. Insertion sort. A simple example, a teacher collecting the answer sheet after examination. He or she follows the insertion sort. How it has been followed? An example. See, what happens? One by one, the collection takes place. So that if the students are sitting randomly, not in a roll number wise, we collect it according to roll number wise, because we find it very easy. But what happens if suppose the room is filled with unordered list? Every different stream, different roll numbers are sitting at different places, and sometimes it happens the last bench gives at the beginning, and the middle one gives at the last. The first one will give in between. So this is how the submission takes place. So what the teacher is going to do? Simple step. See it here. He will take the first two sheet and put them in order. सपोज पहला शीट आया रोल नंबर 10 और दूसरा शीट आया रोल नंबर 7. सो ही हैज गॉट टू शीट्स, ही विल इंटरचेंज 7 10 रख देगा. फिर तीसरा शीट आ रहा है, तीसरा शीट सपोज इट इज कमिंग ऑफ रोल नंबर 4. सो व्हाट इट ही इज गोइंग टू सी, लास्ट से कंपेयर करेगा, अरे ये छोटा है, फिर ऐसा रख देगा 7 4 10. फिर क्या करेगा, 4 7 कंपेयर करेगा, ओके नाउ द ऑर्डर इज 4 7 10. सो एवरी टाइम अ न्यू एलिमेंट कम्स, that is put in the right place by comparing it with the remaining elements which are already there. एक एक करके पहली बार में एक के कंपेयर होगा, दूसरी बार में दो से कंपेयर होगा, तीन से, एंड सो ऑन. सो व्हाट इज हैपनिंग, ही टेक्स द फर्स्ट टू शीट एंड पुट देम इन ऑर्डर.
swapping them if needed, then take the third sheet and put them in the correct position of the previous arranged sheet, then fourth sheet, and so on. This is how it takes place. So this is insertion sort concept. Okay, let me again show you one dance. As usual, bubble sort का dance देखा था, insertion sort का भी एक बार देख लो और थोड़ा concept clear हो जाएगा, and we'll come back again to this topic. So just 2 minutes, I'm going to stop the sharing for a while so that I can give you the sound also. Okay, yeah, see it, how the insertion sort works. Okay, so these are the elements which are in unsorted manner. Unsorted, na ascending hai na descending hai. So insertion sort is going to take place between first two element, पहले दो element आपस में compare होंगे, फिर तीसरा आएगा, वो compare होंगे remaining के साथ, चौथा आएगा remaining के साथ, and this is how the things will be arranged. Just have a look at it. So now see it, how the comparison took place in between the neighboring elements one by one and the previous elements, and now you can see it is arranged. So this is what insertion sort is: arranging an element in ascending or descending order by following the concept, this particular concept. Okay, so this is what we have seen. Now you have to tell me what is the logic you have seen in this particular thing. What's the working logic? 2 minutes, let me close this one and come back to the topic. Okay, so in insertion sort, now you please tell me what are the things that you have seen, कि क्या हो रहा था, कि what was the first point that was taking place, how it was comparison, or what was the concept that it was following. Bubble sort, we know that one thing is very clear in bubble sort. Okay, just a moment. Okay, I have a problem with my pen, no issue. In bubble sort, we were having the concept that the heavier element, it was settling down. It was based on heavier element concept. What is insertion sort based on? Insertion sort किस लॉजिक पे काम कर रहा है? Anyone?
Sir, lighter element. Sir, Absolutely right, absolutely right. Here it is finding out the lighter element. तभी देखो जो छोटा है वो क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड में चला जा रहा है. All right, it is going on the left side. So these are the two way of working or arranging the elements, one by following the finding out the heavier element making it to the right, another by looking at the lighter element and shifting it to the left, and ultimate result will be both. We are going to get a sorted array. So our favorite question, the difference in between insertion sort and bubble sort. So these are the two words which makes the difference in between them. Another difference, yes, this is one difference. Can anyone just find out another difference? कोई दूसरा डिफरेंस बता सकता है जो बबल सॉर्ट और इसमें हमने देखा? फर्स्ट इज एब्सोल्युटली राइट, हेवियर एंड लाइटर. What is the second difference do you find here? How a bubble loop is working? किस ऑर्डर पे काम कर रहा है? देखा था दो लूप है, यहाँ पे भी दो लूप होगा. How is the working going on? Bubble thought were compared, sir. हाँ. Two means one pair word, but हाँ. in assertion short हाँ. compare previously बेटा बेटा थोड़ा सा compared. तेरी आवाज टूट गई, मैं सुन नहीं पाया. मैं ये समझा कि इन बबल सॉर्ट टू आर कंपेयर्ड, बट इंसर्शन सॉर्ट आपने क्या बोला? आई कुडंट हियर इट. सो कैन यू रिपीट इट वन मोर टाइम? द वॉइस इज ब्रेकिंग अप इन फैक्ट. और Yes, एनीवन? sir. So in हाँ. assertion short, first it is first it is compared. हाँ. Then again the previously arranged one is compared with that. हाँ, एब्सोल्युटली राइट, यस राइट. देखो बोथ में ये सिमिलरिटी हो गई कि इन बबल सॉर्ट आल्सो टू एलिमेंट्स आर कंपेयर्ड एट वन टाइम, इन इंसर्शन सॉर्ट आल्सो टू एलिमेंट्स आर कंपेयर्ड वन टाइम. एक बार में दो ही एलिमेंट कंपेयर हो रहे हैं. हाँ, एक राइट की तरफ मूव हो रहा है, एक लेफ्ट की तरफ. बट नाउ द क्वेश्चन इज डिफरेंस. यू हैव टू टेल मी द डिफरेंस. इट इज अ सिमिलरिटी यू हैव टोल्ड मी कि हर बार दो दो का कंपेयर हो रहा है दोनों में. यस, अग्री. I got a chat. I think let me just have a look at the chat. Bubble sort, more number of swap insertion. Ah, Sheenat, very good, very good. Sheenat sahi pakdi hai. She has given an answer that in bubble sort there is more number of loop and in insertion there is less number of loop. No, in fact, this is not the perfect answer. What the answer is, Sheenat understand. In bubble sort, the number of loop decreases. पहली बार में कंपैरिजन हो रहा था तो 6 बार लूप चला, दूसरी बार 5 बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार. इट इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, वेयर एज इन इंसर्शन सॉर्ट द लूप इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. पहली बार में एक एलिमेंट के साथ कंपेयर हुआ, नया आया तो, दूसरी एलिमेंट आया तो दो के साथ, तीसरा आया तो तीन के साथ, बिकॉज देर आर प्रीवियसली अरेंज एलिमेंट विच आर नीड्स टू बी कंपेयर्ड विद. सो व्हाट डू वी फाइंड in the terms of loop? Yeah, I have received one more chat. Let me have a look at it. What the chat says. Ayush, at each iteration, insertion sort removes one element from the input data. Removes what? Galat hai beta. Removes nahi karna use. यहाँ Ayush finds the location it belongs where this is in sorted. It repeats until no input. हाँ, you have explained the iteration correctly, Ayush. Only thing you have used the word remove. Remove यहाँ use नहीं करना है, arrange करना है. ठीक है. So you have explained insertion sort, but the question is comparison करना है. So what is the comparison that we find? The loop in bubble sort, it is in decreasing order. बबल सॉर्ट में लूप जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो कर रहा है, वेयर एज इट इज फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर इन एन इंसर्शन सॉर्ट. ये एक इंक्रीज हो रहा है. Okay, I have received one more chat of Akshada. In bubble sort, it will take the element to proper position, whereas an insertion, the element goes into semi-arranged. Semi-arranged. What do you want to say here? The word is not clear, Akshada. Semi-arranged. Okay. ma'am, sir, array, Array, अच्छा, array, semi arranged semi-arranged array, array. okay, okay. Into semi arranged array. हाँ, yes, you are right, but ultimately when the cycle completes, अगर चार एलिमेंट है तो वो आपस में कंपेयर करते हुए चारों एक ऑर्डर में जम गए. इट डिपेंड्स ऑन द फिफ्थ एलिमेंट. फिफ्थ एलिमेंट अगर छोटा रहा तो फिर से वो चारों रीअरेंज हो जाएंगे. यस, यू आर राइट, एवरी टाइम द अरेंजमेंट इज टेकिंग प्लेस. I do agree to it, but at the end, what is happening? The lighter is getting shifting to the left side. That is the conclusion we are getting here. Whereas here in bubble shot, the heavier is getting arranged into the right side. So there is a change in it. So absolutely right. So remember these two differences. Bubble sort works on heavier element settling down,
And insertion sort works on the concept lighter element settling towards the left or at the top, you can say. And the loop order in bubble sort, the loop is seen to be in decreasing order, whereas in insertion sort the loop is in increasing order. Remember, there are two loops, I'm talking about only one loop here, the steps loop in fact only. So this is the basic difference. Let us understand it with the help of a figure. एक फिगर की मदद से हम समझते हैं हम यहाँ पे कि how the insertion sort is taking place. Suppose दिस इज अनसॉर्टेड एरे, ये एक अनसॉर्टेड एरे है जहां पे इतने सारे एलिमेंट है. देर आर सम फ्लोट वैल्यूज, देर आर सम इंट वैल्यूज, सो मिक्सचर, इट्स अ नंबर. एंड इफ वी फॉलो इंसर्शन सॉर्ट कंसेप्ट, हाउ द थिंग्स वुड बी. सबसे पहले सिर्फ एक ही एलिमेंट को माना जाएगा 15.5. हाँ, इट इज फर्स्ट एलिमेंट, so it will be in this position. Nothing is going to take place. Now when 12 is going to enter, जब 12 आएगा तो 12 और 15 का कंपैरिजन होगा, and the lighter element will be shifted towards the left. You can see it here, 12 और 15 का कंपैरिजन हुआ, ये यहां आ गया. अब बारी है थर्ड एलिमेंट के आने की, 14.25. उसका कंपैरिजन होगा नेबरिंग के साथ, 15.5 के साथ. इफ इट इज लाइटर इट इज गोइंग टू शिफ्ट, एंड देन अगेन द कंपैरिजन विल टेक प्लेस बिटवीन 14 एंड 12. अगर ये लाइटर हुआ तो शिफ्ट होगा, पर लाइटर नहीं है तो द पोजीशन रिमेन सेम. दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस 12, 14.5 एंड 15.5. देन द फोर्थ एलिमेंट, इफ इन द कंपैरिजन, पहले कंपैरिजन में वो अपने नेबरिंग से छोटा नहीं है, तो इट मींस देयर इज नो नीड टू कंपेयर इट विद द अदर्स. बात वहीं खत्म हो गई. तो दिस इज द फोर्थ वन. मूविंग फर्दर, just a moment, let me scroll down. Okay. Now when 11 is going to come, what it's going to happen? In between क्या step हो रहा है, थोड़ा ध्यान दो. ये डायरेक्ट बता दिया 11 यहाँ आ जाएगा, पर कैसे आ रहा है? In between there are many steps taking place. इन दोनों के बीच में, please pay attention, इन दोनों के बीच में बहुत सारे steps हो रहे हैं. क्या step हो रहा है? 11 का कंपेयर होगा नेबर के साथ. यस, इट इज स्मॉलर, सो पहली बार वो यहाँ शिफ्ट होगा. फिर दूसरे लूप, दूसरे इटरेशन में 11 का कंपेयर होगा नेक्स्ट नेबरिंग के साथ, फिर शिफ्ट होगा. 11 का कंपेयर होगा इसके साथ, फिर शिफ्ट होगा. 11 का कंपेयर होगा इसके साथ. तो अल्टीमेटली द रिजल्ट व्हाट वी आर गेटिंग कि 11 नाउ विल बिकम द फर्स्ट लाइटर एलिमेंट एंड इट विल बी एट दिस पोजीशन. सिमिलरली व्हेन द लास्ट एलिमेंट इज गोइंग टू कम, इट इज हाउ द स्टेप्स आर इन बिटवीन. इसके बीच में स्टेप्स नहीं दिखाया है बुक में, ऑलराइट, बबल में दिखाया है, बट इट इज नॉट शोइंग हियर, सो पे अटेंशन. इसके बीच में स्टेप्स क्या हो रहा है? 13.4 इज गोइंग टू बी कंपेयर्ड विद द नेबरिंग 16.3 के साथ, शिफ्टिंग. अब 13 यहां आ गया, 13 कंपेयर होगा 15, फिर शिफ्टिंग होगा. फिर 13 यहां आ गया, 13 कंपेयर होगा 14, शिफ्टिंग होगा. फिर 13 का कंपेयर 12 को साथ होगा, नो शिफ्टिंग, मींस अल्टीमेट रिजल्ट दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट. एंड दिस इज व्हाट द सॉर्टेड एरे विल लुक लाइक. दिस इज हाउ इट विल वर्क. ओके. So, till now, whatever we have seen, if anyone is having any question, हमने अभी पाइथन कोड नहीं देखा, अब हम लास्ट चीज देखेंगे, दोनों प्रोग्राम का पाइथन कोड देखेंगे कि हाउ इन पाइथन हाउ कोड to be written so that we can get a bubble sort and insertion sort. But before moving to that concept, my question is that do you have any doubt regarding the concept कि how it is working between bubble and insertion? क्योंकि ये जरूरी है समझना. No doubt? Yes, no, please, any answer? If any question is there, any type of question, just remember, these are the practical concept, but they are not practically made for larger elements. ये दोनों के दोनों concept कहाँ पे अच्छा काम करते हैं? जब हमारे पास limited element रहे. There are certain limitations of this sorting. All right, you will find it in the book, think at the last is given. हाँ, प्लीज today's homework would be that you will be reading this concept. इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ बबल सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट, एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस, कि इसकी क्या प्रॉब्लम है, where it works and where it doesn't work, so it takes more time. So seeing those things you have to just understand the thing. ये तो हो गया एप्लीकेशन. हाँ, एंड लिमिटेशन, हाँ ये रहा, यहाँ पे देखो नोट पार्ट. हैव अ लुक एट दिस नोट पार्ट. The insertion sort algorithm is efficient for small size sequence,
but with the increase in size of sequence it becomes costlier in terms of number of operation, time taking हो जाता है. So इसे applicable हम करते हैं जब हमारे पास array छोटा है. What is the definition of छोटा? Small. The definition of small means here at the most you had 10 elements, 15 elements, 20 elements. Practically in real life we have more elements, so we don't adopt this feature at the time, but this is a very good feature of sorting for smaller elements, for when the size of the element is small. So chalo, one work, I'll just give it. Let me open a word for you. Keep your notebooks ready, everyone. Okay, here it is. Suppose this is an unsorted array having 5 elements. Now, exam question, how the things will be asked. You have to tell me the so what do you want the question from? Bubble sort or insertion sort? क्या किससे क्वेश्चन पूछूं बताओ पहले. योर चॉइस. सर बबल पहले. बबल पहले, चलो ठीक है, तो बबल सॉर्ट बेस्ड क्वेश्चन सेम मैं इंसर्शन सॉर्ट में भी पूछूंगा. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट you have to tell me, just a moment, let me write it so that it becomes very clear to you. What just a moment. Okay, answer please. What would be the array after third iteration in bubble sort? Third iteration. सर 25, 35, 55, 65, 75. हाँ बेटा, send it in the chat please, send it in the chat, ठीक है. And I'll solve the answer here also. How I'll get the thing. I'm solving it. Meanwhile, you also solve it. First iteration. So what is going to happen? Let me bring my uh, control C, control V. Okay, first iteration. This is what is taking place. First step. Okay. 55, 75, 35, 25, 65. देखो मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ ना. So please understand it what I'm trying to do. 55, 35, sorry, 35, 75, 25, 65. Okay. This is my position after first iteration. Everyone agrees? अगर क्वेश्चन पूछा रहता कि what would be the array after first iteration in bubble sort, तो I would have given this answer, the selected one. Do you agree with me? Yes or no? First question. Yes? Yes, sir. Now, Yes, sir. now this is not the answer. The answer is we have to move to the third. So now I'll solve for second iteration. How I am solving it?
on the answer paper? Is it clear to you? I'm showing the steps. All right, this is what needs to be done. Okay, just a moment. एक minute. Let me do some shortcuts, copy pasting first. Okay. Arey Baba, my mouse is not working. Why is it so? Okay, delete entire row. Okay, so this is going to be my first step in this one. Okay, second iteration. Now the second step, 35, 55. Now, अरे रे रे रे, control C, control V, 35, 55 की जगह होगा 25, 55, and at last it would be control C, control V. It would be same. Okay, so my answer, अगर क्वेश्चन पूछता कि भैया सेकेंड इटरेशन के बाद बबल सॉर्ट बताओ, तो माय आंसर वुड बी दिस. कैन यू सी these two steps are same, previous step and this step, but it is going to work for 4 times. So this is my position after second iteration. Now is this the answer? No, this is not the answer. The question is asking about third iteration. तो चलो भैया मैं third iteration भी solve करता हूँ. Let me solve it. 2 minutes. This is the question and the answer. I needed more steps. So control C, control V, and now time to solve third iteration. Third iteration where the things would vary. Third iteration चालू होगा second iteration के आखिरी step से. So this is the number that I'll be taking, and now again I'll be comparing it. और ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 35, and last steps would be the same thing. So this is my final answer. The bubble sort after third iteration would be 25, 35, 55, 65, 75. तो देखो यहाँ पे थर्ड स्टेप के बाद ही मेरा एरे जम गया. अभी भी इसमें फोर्थ इटरेशन भी चलेगा. इट विल चेक, इट विल वर्क, इट विल नॉट गो फॉर एनी साइकिल, बट इट विल definitely check. So let me just verify the answer. सबके 25, 35, 55, 65, 75. Okay, very good. Everyone has given correct answer. अन्वेषी, अरिन, अरिन गड़बड़ हो गया. अरिन का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. 25 तेरा सेकंड एलिमेंट दिख रहा है, नहीं होगा बेटा. ठीक है. And Isha's answer is right, Akshada's answer is right, Anveshi's answer is right. Okay, so whatever answer you have given is perfect. Arin का बस एक मिस्टेक हो गया. Arin has interchanged the position of these two. ठीक है अरिन, थोड़ा सा ध्यान रखना. सीट. नाउ प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. अब इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हाउ आई एम गेटिंग द आंसर दिस इज नोन टू यू, एंड दिस इज हाउ यू विल बी सॉल्विंग इन द नोटबुक. जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है. सी, 3 स्टेप दिया है आपने, 3 नंबर का क्वेश्चन. And these steps are nothing. It's very easy. If you know the working logic, this is how you have to show in your answer book. Okay, please take the screenshot if you want. ठीक है. So now homework. The same way you have to answer me. The array is now the same. Now you have to tell me. Screenshots आपने ले लिया ना? Yes, please confirm once. Anyone? Yes, sir. Okay. Okay. So now your homework is you have to tell me what would be the array after fourth iteration. Fourth iteration in insertion sort. सीट बेटा, प्लीज अंडरस्टैंड. मैंने तो आखिरी लाइन देख के सबको बोल दिया हाँ सही है, बट इफ यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, गलती से सही आंसर सही आ गया और बीच में सब गोलमाल है ये स्टेप्स में, तो यू वोंट बी गेटिंग. प्लीज अंडरस्टैंड इट. आई हैव ओनली सीन योर लास्ट आंसर, नॉट द कंप्लीट स्टेप. So now you have to give me this particular one. Key in insertion sort, what would be the fourth iteration? So solve it and you can WhatsApp me the things. Chalo beta, I'll be now ending the class here only. Just a Sir? moment.